Your activity teacher is back with another story for all of you. So do you want to know what is the story about? Yes? The story is about the 3 little pigs. See? 1, 2, 3. These all were brothers. ये तीनों क्या थे? भाई थे. Okay, children? So let us begin the story now. Very good. So, once upon a time, there were 3 little pigs who decided to go and live in the jungle. इन तीनों ने decide किया कि हम जंगल में जाके रहेंगे. So, the first pig said, Yes, we will go to the jungle, but we should build our own houses. उसने कहा कि हमें घर बनाने चाहिए अपने लिए. So the second pig said, Yes, we must build our own houses because house protects us from heat, cold, rain and storm. तो second pig ने क्या कहा कि हमें घर बनाना चाहिए क्योंकि घर हमें गर्मी से, बारिश से, ठंड से और विंड से भी बचाता है, आंधी तूफान से बचाता है ना? आपका घर आपको इन सब चीजों से बचाता है? Yes. And the third pig said, Yes, we must build our own houses. So let us go and make our houses. And so the 3 little pigs went to the jungle to build their own houses. The first pig was very lazy. जो first pig था वो बहुत lazy था, कोई काम नहीं करना चाहता था, बहुत आलसी था. तो उसने कहा, I will make the house with straw and mud. उसने सोचा कि मैं बहुत आसान सा, इजी सा घर बनाऊंगा, सिर्फ जंगल में जो स्ट्रॉ होगी उनका और मिट्टी से लेके एक घर बना लूंगा. So the first pig made a house out of straw and mud and he started living in the house. और वो उस घर में रहने लग गया. The second pig said, I will not waste time. I will make the house with wood and bamboos which I find in the jungle. उसने कहा कि मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं? जंगल में जो भी लकड़ी होगी और जो बैम्बू पड़ा हुआ होगा वही तोड़ के, वही उठा के मैं अपना लकड़ी का घर बना लूंगा. So the second pig made the house with wood and bamboo. उसने wood और bamboo का घर बना लिया. And he started living in it. The third pig was very hard working. जो third pig था वो बहुत काम करता था, बहुत मेहनती था. उसने सोचा कि मैं strong घर बनाऊंगा. So he wanted to build a strong house. So he said, I will make the house with bricks and cement. So इस पिग ने क्या किया? इसने ब्रिक्स एंड सीमेंट के साथ घर बनाया. देखो उसने ब्रिक्स एंड सीमेंट का कितना सुंदर घर बनाया है ना? और इसने बहुत मेहनत की ये घर बनाने में. एंड देन ही स्टार्टेड लिविंग इन दैट हाउस. One day when the first pig was resting in his house, he heard a knock on the door. Knock, 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 knock. Who's there? I am the wolf. I will eat you. Come outside the house. No. I will not come out. Otherwise you will eat me. So the wolf said, Okay, if you will not come out, I will huff and I will puff and I will blow your house. उसने कहा अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं हफ करूंगा और पफ करूंगा और इतनी जोर से फूंक मारूंगा कि तुम्हारा घर उड़ जाएगा. So he huffed and he puffed and he blew the house. और क्या हुआ? वो जो हमारा घर था वो उड़ गया. बिकॉज वो घर किसका बना था? स्ट्रॉ एंड मड का. इसीलिए वो कमजोर घर था और वो उड़ गया. So first pig was very frightened. वो बहुत डर गया. और फिर क्या हुआ? He ran to the second pig's house. वो भाग गया दूसरे पिग के घर पे. And the fox followed him. वो उसके पीछे पीछे चला गया. Now
both the pigs were in the wood and bamboo house, and the fox came there. Knock, 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 knock. Who's there? I am the fox. I will eat you. Come outside. No, 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 we will not come out. Otherwise, you will eat us. Okay, if you will not come out, I will huff and I will puff and I will blow your house. So the fox, he huffed and he puffed and he blew the house. So क्या हुआ children? जो लकड़ी और बैम्बू का घर था वो भी स्ट्रॉन्ग हाउस नहीं था. So उसकी फूंक से वो घर उड़ गया. And then both the pigs, they ran towards their brother's house. वो अपने भाई के घर भाग गए. And the fox followed them. Now the three little pigs were in the bricks and cement house, which was very strong house. And now the fox came. Knock, 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 knock. Who's there? I am the fox. I will eat you. Come outside. No, 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 we will not come. Okay, then I will huff and I will puff and I will blow your house. So, what did the fox do? He huffed and he puffed and he tried to blow the house. But देखो children क्या हुआ? वो घर तो उड़ा ही नहीं. So now the fox was very tired. Oh ho ho, I am very tired. I cannot blow this house because this house is very strong. It is made of bricks and cement. I cannot blow this house. I am very tired, so I will go back today and I will come back some other day. So ये जो फॉक्स था ये थक गया, इससे तो घर उड़ा ही नहीं, तो ये अपने घर वापस चला गया. And the three little pigs were very happy. See, they are very happy. And they realized that we should always work hard. इन तीनों ने समझ लिया कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए. और जो फर्स्ट और जो सेकंड ब्रदर थे उन्होंने थर्ड ब्रदर को थैंक यू बोला. थैंक यू ब्रदर, यू सेव्ड आवर लाइव्स. इट्स ओके, बट यू शुड ऑलवेज वर्क हार्ड. इसने कहा कि हमेशा आपको मेहनत करनी चाहिए और लेजी नहीं रहना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, सो व्हाट डिड यू लर्न टुडे? यस, वी ऑल लर्नड दैट वी शुड work hard and we should not be lazy. हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए. So children, did you all enjoy the story? Yes? Very nice. So we will meet again very soon with another activity. Bye bye.